नमस्कार दोस्तों। वीडियो के पिछले 2 भागों में हमने लैपटॉप की रैम को अपग्रेड किया था और इसके अलावा इसकी हार्ड डिस्क को निकालकर उसकी जगह हमने एसएसडी को इंस्टॉल किया था। आज बारी है इस एसएसडी में ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की, जिसके लिए हमें चाहिए बूटेबल पेन ड्राइव। पेन ड्राइव लगाया हमने, बूटेबल पेन ड्राइव। अभी ऑन हो रहा है सिस्टम। F1 continue to boot from the automatic। सेकंड पार्ट कंटिन्यू 86 सेटअप बूट फर्स्ट इंटरनल ड्राइव। एंटर मारते हैं। विंडोज 10 सेटअप, लोडिंग फाइल्स। And next, install new operating system। I don't have key। If you have key, then put in, we don't have key। now अभी ये है, इसमें कौन सा लोड करें? होम, प्रोफेशनल। आपका पहले वाला किस में होम था? होम था तो होम ही करो। मदरबोर्ड से ऑटोमेटिकली ले लेगा, वो मदरबोर्ड को आइडेंटिफाई करता है। होम करते हैं। प्रोफेशनल कर दोगे तो वो पायरेटेड में लेगा फिर। पायरेटेड ही है, एक्टिवेट नहीं किया था। अच्छा, उसमें फिर पहले वाले वो एक्टिवेटेड नहीं था। ठीक है, चलो फिर होम ही रखो। प्रोफेशनल वाले में तो ज़्यादा ध्यान देता है ना वो। कस्टम, यहाँ कस्टम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले हार्ड डिस्क में कोई विंडो नहीं है, तो कस्टम इंस्टॉल करेंगे। हार्ड डिस्क 240 GB SSD थी। अब इसमें (150 और 75) दो पार्टीशन करें या सिंगल पार्टीशन लैंड में? सिंगल लैंड, सिंगल पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल पार्टीशन। कॉपी फाइल। रीजन क्या है ना, आप हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा लगा रहे हो उसमें, इसलिए पार्टीशन का रिक्वायरमेंट है नहीं। ऑपरेटिंग उसको एक ये भी रहता है, सी ड्राइव ज़्यादा स्पेस होता है ना, पर इसमें तो हार्ड डिस्क में रहता है। सी ड्राइव में अगर ज़्यादा स्पेस रहता है ना, तो उसको सीक टाइम, डाटा इधर उधर फैले रहते हैं, सीक टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। अच्छा, इसलिए छोटे रहते हैं। लेकिन इसमें तो वैसे भी सीक टाइम कम है, क्योंकि वो एक तो रूम के आधे एरिया में डाटा हो, एक पूरे एरिया में तो ज़्यादा के उठाएगा तो टाइम लगता है उसमें। ये फंडा रहता है साथ। ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना, ताकि भर जाए। ₹4100। Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator.
Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? रीजन तो स्टेट इंडिया डालना पड़ेगा ना. Your keyboard is set to US. Want to stick with... Do you also type with another keyboard layout? Now let's get you connected to a network. जरूर That way है. you can get updates, apps, नहीं होता. and cat videos कनेक्ट कर as दो, soon as कनेक्ट कर possible. दो. How about the first one on the list? Want to use that one? Now type your credentials. Mission accomplished. You're all linked up. मिशन कंप्लीट. Now we have some important setup to do. Please don't turn off your device. ठीक है, नहीं करेंगे. Okay, we got through this part of setup. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. मर जा भाई आगे. हाँ चला, चलती है. Use Windows Hello to unlock your PC with just your fingerprint. It's not only faster, it's more... स्किप कर देते हैं. Want to set up a pin? क्रिएट पिन. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them, and select Accept when you're ready. Based on the activities you choose here, you'll get a personalized experience as you set up your device. स्किप कर देता हूँ, बाद में देख लेंगे. We can work some magic so you can use your Android phone from your PC. लेटर. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? आउट नाउ कर देता हूँ. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. देखने के लिए. हाँ, फिर से ओके, start. रीस्टार्ट. ओके, अभी हमने SSD इंस्टॉल कर दी है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया है, विंडोज़ 10 होम वर्जन. अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है बूटिंग में. ये मैंने ऑन कर दिया है दोनों, स्टॉप वॉच एंड लैपटॉप.
38-35 सेकंड्स में ऑन हो गया, पहले 2 minutes लेता था। 30 सेकंड्स ले रहा था। हाँ, तो SSD से इतना डिफरेंस आया है इसमें। यस। चलो अभी देखते हैं, हार्ड डिस्क को कैडी यूज़ करके CD-ROM ड्राइव की जगह इंस्टॉल करते हैं।